Atwood's machine basically two masses, different masses connected by one massless string with one frictionless and weightless pulley. ये है आपकी Atwood's machine. So लेफ्ट साइड में देखिए आप एक स्मॉल मास एंड राइट साइड में देखिए एक कैपिटल एम लिखा हूं. ए बिग मास इज कनेक्टेड, राइट. एंड ये जब कनेक्ट होते हैं थ्रू दी फ्रिक्शनलेस पुली, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि बिगर मास विल पुल इट डाउन and the smaller mass will go off. As they are connected to the same string, what will happen? The lower mass will be accelerated upward and the heavier mass will be accelerated downward, right? चलिए आप फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए पहले आप. What is this happening for? The small mass m. Obviously acceleration due to gravity is acting, so mg is the weight of this mass and tension would be acting, tension would be acting on this, so T is acting upward and mg is acting downward. Now as the body is going up along the positive y axis, so acceleration has the plus a sign here as per the vector concepts. So when you are writing the free body diagram and the force equation, look at what I have done. आपने क्या किया है यहाँ, T टेंशन अपवर्ड माइनस mg the weight downward is your net force acting on it, that is m into a. So net force acting on the mass of the body with acceleration a, so m into a you are writing. Let us write this one as equation 1. Let it be equation 1. Same way, if you look at the right side equation, the capital M, the big mass, see weight, big mass into g, mg is acting downward, tension is acting upward. Now, as the misconception here, I will tell you that as mg is pulling it down, so directly you write mg minus t equals m into a, which I don't feel you should write. You should understand first the vector concept of this, that the tension here minus the mg, the net force which is acting on this body is m, capital M, into the negative directions acceleration, negative y directions acceleration, because this body is accelerated downward, the capital M is accelerated downward, so minus sign will be putting here, minus capital M into A. Am I right? Is it clear? So you will be starting with this equation, T minus capital Mg equals minus capital M into A. Got the concept? Why the negative sign for the acceleration? Because the acceleration is acting on negative y axis. Then you do the side change of the equation and you write mg minus t equals capital M into A, and let it be equation 2. This is your equation 2. Now the basic maths, fundamental maths, your class teachers or physics teachers must have told you all how to derive for the acceleration and how to go for the tension. So eliminating tension on both the equations 1 and 2, you will be getting the expression for the acceleration, right, which will be leading to capital M minus small m divided by capital M plus small m whole bracketed small g, right, acceleration due to gravity. And putting the value of a, acceleration, in either of the equation 1 or 2, आपको क्या मिल जाएगा, the tension, right. Substitute in any of the equation for the value of a, आपको मिल जाएगा tension, right. Tension would be leading to one expression twice the product of their masses upon the sum of the masses into acceleration due to gravity. Am I right? So ये आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस में
चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस में भी बहुत क्विकली जहां आंसर करना होता है वहां भी पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ एक्सप्रेशन क्या है, डिफरेंस इन मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस इनटू एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेंशन क्या है एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, टेंशन क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपन सम ऑफ द मासेस इनटू एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Am I right? तो आप फॉर एग्जाम्पल यू प्रैक्टिस इट नाइसली, देन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ क्विक आंसर्स करने के लिए, एक ये डिफरेंस अपन सम इनटू जी एज द एक्सप्रेशन, डिफरेंस ऑफ मासेस अपन सम ऑफ मासेस इनटू जी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 5 केजी यहाँ लेते हैं और 3 केजी यहाँ लेते हैं, ठीक है, 5 केजी मास एंड 3 केजी मास। ऑब्वियसली इक्वेशंस आर देयर ऑन द बोर्ड, लुक एट 5 और 3, आपको क्वेश्चन आ गया 5 kg mass on the right side and 3 kg mass on the left side is connected to one massless pulley, right? And find the acceleration. तो आप 5 minus 3 अपन 5 plus 3 into g, 5 minus 3 2, 5 plus 3 8, 2 upon 8 into g, 1/4 of g, right? So acceleration will be 1/4 of g. Quickly you see from the options and do it correctly. Am I right? Similarly, the tension, the product of masses, so 2 into 5 into 3 upon 5 plus 3 into g. So quickly find the answer for the tension and do it. Go for the solution, right? Same way, any mass, variable masses will be given to you in the questions, right? 7 kg and 4 kg for example, 11 kg and 9 kg for whatever the small mass and the capital mass are given to you, then you are using this formula acceleration and for the tension. Clear? So आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि कनेक्टेड मासेस अगर एटवुड्स मशीन में है तो आपको एक्सप्रेशन क्या है, मेरे साथ बोल भी सकते हैं, डिफरेंस इन मासेस अपन सम ऑफ मासेस इनटू एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टेंशन क्या होगा, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस upon the sum of the mass into acceleration due to gravity. Okay? So मैं बैठे बैठे सोच रहा था, आप लोग जब बोले मेरे को कि एटवुड्स मशीन थोड़ा समझा दीजिए हमको, कैसे क्विकली हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सो मैं सोच ही रहा था कि करें क्या, ये तो लेबोरेटरी नहीं है जहां आपको एटवुड्स मशीन के पास लेके जाऊं और आपको समझाऊं। तो हमेशा told you in my previous motivational lectures, आप हमेशा ध्यान रखिए आपकी किचन फिजिक्स, किचन केमिस्ट्री और किचन बायो, मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को, तो आप उसको हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ बैठे बैठे देखा मेरे ड्राइंग रूम में क्या मिलेगा, तो मेरा एक वेट लिफ्टिंग मशीन था और उसकी कुछ इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ, तो उसको मैं लाया। मैं सोचा इससे बच्चों को कैसे एटवुड्स मशीन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ द कनेक्टेड मासेस विल हैपन। तो देखिए आप, मैं क्या किया, एक ये आपकी डिस्क, ये ब्लैक डिस्क को इसमें ये रॉड में कनेक्ट कर दिया, राइट, और एक रिबन लेके, एक बेसिक रिबन लेके देखो दोनों साइड में 2 वेट को मैं डाल दिया। और बेसिकली जब वेट लिफ्टिंग का वेट्स है दोनों सेम है, राइट, ये आपकी जो ब्लॉक्स हैं ये दोनों सेम है, सेम वेट की हैं, तो इस दोनों को मैं कनेक्ट कर दिया। और देखो आप कि बोथ दी मासेस जब सेम है m एंड m, तो ये देखो m माइनस सेम m, अगर कैपिटल M माइनस कैपिटल M करो सेम हो गया ना मास, तो कैपिटल M माइनस कैपिटल M 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग डिवाइडेड बाई n जी 0, एक्सप्लोरेशन इज 0। देखो एक्सप्लोरेशन इस बॉडी का नहीं हो रहा है, एक्सप्लोरेशन इज नॉट हैपनिंग फॉर दिस बॉडी, राइट। एंड हाउ मच इज द टेंशन एक्टिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ मच इज द टेंशन, आप देख लो, ट्वाइस m इंटू m अपन m प्लस m इंटू g। तो आपको टेंशन भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, हाउ मच इज द टेंशन, 2m स्क्वायर, सेम m है ना, तो 2m स्क्वायर अपन 2m
m square अपन 2m into g. आप बना सकते हो. व्हाट इज द टेंशन? एम आई क्लियर? सो आप देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर. 2m square अपन 2m, 2m square अपन 2m. एक m कैंसिल कर दीजिए आप, 2 कैंसिल हो गया, m इंटू जी, m इंटू जी, m इंटू जी. The tension acting on the string, the tension acting on the string on the left hand side and on the right hand side are same as in other cases also the tension would be same, but here you will be getting m into g equivalent to weight of the body of one side. Clear? So आप इसको एप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे चैनल को, बिकॉज आई ऑलवेज मोटिवेट यू ऑल कि मेरा लेक्चर आप देखते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सच दैट आई विल बी ऑल्सो मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर सच काइंड ऑफ फिजिक्स लेसन्स फॉर योर बेनिफिट्स. और मैं आपको एज आई टेल यू माई headline for the website, for the YouTube channel is also gvoicer.inspires, right? तो आपको क्या इंस्पिरेशन यहाँ से मिल रहा है आप देख लो. आपको ज़्यादा मैं भाषण नहीं मारूंगा. Why we are lacking of getting or fetching Nobel prizes in the global platform in physics. ये मत सोचो कि ये चीज़ करके आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा. मेरा बोलने का मतलब है कि आप किचन फिजिक्स, किचन केमिस्ट्री, किचन बायो को ध्यान तो दीजिए. आप नेचर के साथ रहिए, आपको जो अवेलेबल है उसी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और आपकी फिजिक्स की लॉज अगर साथ में काम कर रहे हैं तो यू विल बी मोटिवेटेड, यू विल बी इंस्पायर्ड टू गो फॉर मोर टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड यू विल बी सॉल्विंग इट डेफिनेटली. सो सीवी रमन जी को याद करते हुए मैं बोलता हूँ कि आप कोई ऐसे चीज मत ढूंढो जहां आपको एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज दिया जाएगा जहां सारे मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स, इक्विपमेंट्स सब कुछ वेल फिटेड है, और आप जाके खाली डाटा कलेक्शन करते हैं, खाली डाटा फिलअप करते हैं. आप 5 और 3 kg यहाँ डाल के डाटा क्या हुआ एक्सेलरेशन की, टेंशन क्या हुआ एक्सेलरेशन, टेंशन क्या हुआ थ्रेड्स की, वो आप डाल दिया और आपने करके आ गए कि मेरा फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. राइट? यू माइट बी स्कोरिंग वेरी हाई इन योर प्रैक्टिकल फिजिक्स, बट आपने करा क्या? व्हाट यू डिड, व्हाट इज योर इनोवेशन? राइट? आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की अगर होना है, रखना है, तो आप खुद अपना आसपास की चीजों में स्टडी करना सीखिए. खुद आसपास की चीजों से कैसे हमारे फिजिक्स नेचर के साथ है, और कैसे आप स्टडी ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ फोर्सेस, कैसे आप डेली लाइफ में डील कर रहे हैं, उसको छोटी छोटी चीजों से बना के देखिए. यू विल बी मोटिवेटेड एंड यू विल बी इंस्पायर्ड. ओके, मेरे को तो हमेशा आप नहीं सुन सकते. यू आर हैविंग योर ओन लाइफ स्टाइल, moving to classes, going to coachings, going to different places, learning from seniors, learning from juniors. So I'm not telling you much. I'm just telling you that try to understand the basic concepts of physics from the basics of the availability of the gadgets in your home. Thank you. Signing off. Let's have the next discussion sometime in the next class, right? Okay. So if you have not subscribed my channel, kindly subscribe again, like and share. I'll be obliged. Thank you. God bless. Do it.